सो गाइस सैटरडे इज द डे व्हेन वी डू एक्टिविटी और आज हमारी जो 3 एक्टिविटी है वो बिल्कुल अमेजिंग है। सबसे पहली एक्टिविटी है हमारी कैटरपिलर। ये आपको बताएगी द इंपॉर्टेंस ऑफ टीम वर्क, किस तरीके से टीम में हर व्यक्ति का रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है और आप जब एज अ टीम कोई काम करते हैं तो किस तरीके से आपको कितना कोऑर्डिनेट करना पड़ता है किसी आउटकम तक पहुंचने के लिए। The second activity is going to be Chinese whisper activity। यहां पर आप देखेंगे जो मिसकम्युनिकेशन होती है वो किस तरीके से होती है और कैसे हम कोई मैसेज जब आगे तक पहुंचाते हैं डायरेक्ट नहीं किसी और के थ्रू तो वो कैसे बदल जाता है। That you are going to learn in this activity। And the third activity, the last but not the least, इज माइंड गेम। जैसे हम लोग एक्सरसाइज करते हैं अपनी बॉडी को स्ट्रांग बनाने के लिए, उसी तरह से अपनी मेमोरी को शार्प करने के लिए हम ये इस तरह की एक्टिविटीज कर सकते हैं। इसे बोलते हैं माइंड गेम एक्टिविटी। सो गाइज लेट्स गेट स्टार्टेड। And now the caterpillar race begins. Start, guys. Make sure you don't use hands. It's a teamwork. All right, out, 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 out. Move away. Move away. Only 3 people are now in the race, I guess. On light. All right, आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए. बहुत बढ़िया. You're doing great. Well done, well done, well done, Daya. Well done. Keep it up. And there you go. Come on, guys. Continue, continue, continue. Make sure you don't let your balloon fall, otherwise you will be out. This time you guys are doing great. All right, somebody is playing very smart. Saurabh, don't use hands. Very good, very good, very good. Harshita is out. All right, well done. Woo! Parker doesn't play in the park anymore. What sentence have you got? पीकर पाकर मैंने पाया। पीकर पाकर मैंने पाया। और यू कैन टर्न अराउंड, आपको ये कोई मैसेज देंगे, थोड़ा सा और पास चले जाइए उनके, आप पीछे घूम जाओ।
एक बार रिपीट करो. रीना एंड रोहन और लंदन ऑन लंदन. थोड़ा इधर आओ, इधर घूमो. रोहन और लंदन. क्या? रीना एंड रोहन फ्रॉम लंदन. Alright, so what is the message that you got? Reena and Rohan. Let's get back to the first participant. What was the message? Alright guys, hold on. Alright, we would require the balloons again. So Anjali, we are back to you. Do you remember what message we gave you? Yeah, what was it? Rohan and Reena going to London. On the way, their plane crashed. Alright, so that was the message. So we saw that we heard only Rohan and Reena at the end, whereas the message was a bigger one. So that is called miscommunication. Mind game. Here we need to listen to the instructions very carefully. It is not a teamwork, it is an individual activity. So आपको individually instructions को ध्यान से सुनना है और उसके according act करना है जो बताया जाएगा. So are we ready? Yes sir. Alright, let's get started. Walk. और जब मैं बोलूँगा stop, उसका मतलब है stop. Alright, when I say walk, you need to walk wherever you are, and when I say stop, you need to stop wherever you are. So let's get started. Walk. Stop. Walk. 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 Stop. Stop. Walk. Walk. Stop. Walk. Stop. Nowadays, walk means stop
and stop means walk. Walk means stop and stop means walk. Right? Yes, sir. Alright. Stop. Walk. Walk. Stop. Stop. Walk. Walk. Stop. So देखिए थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है. You can turn around. You can turn around. Stop. Stop. Walk. Stop. Walk. Alright. तो देखिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है क्योंकि माइंड कुछ और कह रहा है, हम लोग कुछ और समझ रहे हैं, राइट? So it is not that easy. Now we will add something to it. Now guys, when I say clap, you need to clap, and when I say jump, wherever you are, you need to take a jump. So clap means clap, jump means jump. Clap means clap, jump means jump. Walk means stop, stop means walk. Alright? So walk, stop, walk, jump, clap, jump, walk, stop, clap, walk, stop, jump. Very good. Now guys, what we got to do is, this time, jump means clap, clap means jump. Jump means clap, clap means jump. Stop means walk, walk means stop. Stop. Jump. Lord, I'm 500 miles away from home. Lord, I'm one, Lord, I'm two, Lord, I'm three, Lord, I'm four. Lord, I'm 500 miles away from home. Away from home, away from home, away from home, away from home. Lord, I'm 500 miles away